It is an interactive system which is capable of responding to external stimuli. Hello friends, welcome to Bansal Science Coaching. I am Shivam Bansal and today we will be discussing about the topic living. The topic which we are discussing belongs to Chapter 1 of Biology NCERT Class 11. So firstly, what is living? And here living refers to some of the basic characteristics which are mainly indicated in the definition. This is what is living? So living it is a self-replicating self-evolving and interactive system capable of responding to external stimuli. So, an organism is said to be living if it shows the process of self-replicating, if it shows the process of self-evolving, and it is an interactive system which is capable of responding to external stimuli. So, this definition makes a sense of lot. It is a lot about what is a living organism. So, self-replicating refers to the cell division. So, organism is said to be living when the organism shows replication, cell division. In simple terms, I can say cell division and DNA replication. And if I deal about self-evolving, so what is self-evolving is the criteria of evolution. So if an organism shows the criteria of evolution, then organism is said to be self-evolving, and this is also a part of living. Interactive system. What does interactive system mean here? So interactive system means that the cells interact to form a tissue. Cells which are performing a similar function these cells interact to form a tissue, and tissue which is performing a similar function, this tissue interacts to form an organ. An organ, multiple organs which shows a similar function or performs a similar function, combines to form an organ system. So basically the main thing is the interactive system refers to this adjoinings. First is the cell which interact with each other. These cells which are performing a common function, they interact with each other and forms a tissue. Tissue which are performing a common function, these tissue makes aggregation or interaction and forms an organ. Organ which performs a similar function, they shows the interaction and forms the organ system. So, a living organism is characterized by presence of its self-replicating power, self-evolving power, interacting power. Interacting power refers to the thing which I have taught earlier, and capable of responding to external stimuli. So, this is the most important part of the entire definition, capable of responding to external stimuli. So, what is stimuli here? So, stimuli is any sort of physical or chemical disturbance.
So we often see that in case of any physical disturbance or any chemical disturbance, our body basically responds. Why our body responds to these physical and chemical disturbances? Because we are living. Hence, the living is characterized by multiple things or multiple steps, multiple options. First is a case of self-replicating. Second, it must be self-evolving. Third, it must be an interactive system. And fourth, it must be capable of responding to external stimuli. So an organism which shows all these characteristics is surely said to be living. So definition tells us a lot about living, but we will be discussing more about living because these not self-replicating, self-evolving, interactive, capable of responding to external stimuli, these are not enough. We have more parameters to decide whether an organism is living or not. So we have discussed earlier that organism is said to be living if it is self-replicating, self-evolving, interactive system, capable of responding to external stimuli. तो हमने अभी तक यही बात करी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे हम लिविंग बोल सकते हैं. वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, सेल्फ इवॉल्विंग होना चाहिए, साथ साथ इंटरैक्टिव सिस्टम होना चाहिए वो अपने आप में, और इट शुड बी कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. इतनी हमने बात कर ली, लेकिन सिर्फ इन्हीं पैरामीटर्स के हिसाब से हम लिविंग नहीं बोल सकते. लिविंग के और भी पैरामीटर्स होते हैं. अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन से पूछूं इस बारे में कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि कोई लिविंग है या नहीं है, तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन चार चीजों के बारे में बात करती है. सबसे पहली चीज वो बोलती है कि ग्रोथ, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो कर रहा है वो लिविंग हो सकता है. सेकंड, पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन सेकंड बात करती है रिप्रोडक्शन की, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो कर रहा है तो वो फिर लिविंग हो सकता है. थर्ड जो बात करती है, दिस इज अबाउट द मेटाबॉलिज्म, and fourth is about consciousness. तो अगर मैं एक पॉपुलेशन का सर्वे करूं तो ज्यादातर लोग जो हैं वो इसी बारे में बोलना चाहेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग माना जा सकता है अगर वो ग्रोथ कर रहा हो, रिप्रोडक्शन कर रहा हो, मेटाबॉलिज्म शो कर रहा हो, या फिर कॉन्शियसनेस हो उसके पास कुछ ना कुछ. अब हम यहां क्या करने वाले हैं, इन चार कैरेक्टरिस्टिक्स में से देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लिविंग को रिप्रेजेंट करता है या नहीं. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक के साथ हम डील करेंगे. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ. तो अब हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में. तो ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया जाए, सबसे पहली वो चीज. तो ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन बॉडी मास एंड नंबर ऑफ सेल्स. तो कोई भी बॉडी है उसका मास अगर बढ़ रहा है और उसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम कहेंगे दैट इज अ पॉजिटिव ग्रोथ. और अगर इसका उल्टा हो रहा है, मतलब बॉडी मास कम हो रहा है या फिर नंबर ऑफ सेल्स कम हो रहे हैं, तो फिर हम उसको बोलेंगे नेगेटिव ग्रोथ. तो ग्रोथ को बेसिकली दो पैरामीटर से ही डिफाइन किया जाता है, देखा जाता है. सबसे पहला पैरामीटर जो है दिस इज द बॉडी मास एंड सेकंड पैरामीटर इज नंबर ऑफ सेल्स. तो अगर बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ऑल्टरनेशन हो रहा है बॉडी मास में या फिर नंबर ऑफ सेल्स में, तो फिर ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है. और ग्रोथ बेसिकली दो टाइप की मैंने अभी बताई, पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ. पॉजिटिव ग्रोथ के केस में क्या होगा, बॉडी मास और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, करेंगे. और नेगेटिव ग्रोथ में क्या होगा, बॉडी मास डिक्रीज होगा और नंबर ऑफ सेल्स भी डिक्रीज होंगे. बट एनसीईआरटी जो है वो डेफिनेशन में साफ साफ यही लिखती है. वो ग्रोथ को किस बेसिस पे डिफाइन करती है, इंक्रीज इन बॉडी मास एंड नंबर ऑफ सेल्स. मतलब एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ को ही सपोर्ट करती है.
So this is the characteristic of positive growth as increased word has been utilized here. अब हम ये चेक करेंगे कि ग्रोथ जो है क्या ये लिविंग का पैरामीटर है या नहीं है। तो एक नॉन लिविंग चीज को लेके चलते हैं, जैसे कि मैं लेके चलता हूं बड़े बड़े पहाड़ों को, माउंटेन्स को या फिर जो रेत के टीले होते हैं उनको लेके चलते हैं। तो अगर मैं देखता हूं अभी माउंटेन इतना है, अब 5 साल बाद अगर मैं उसी माउंटेन को देखता हूं तो उसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ गई, और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उसकी हाइट और बढ़ जाएगी, या फिर उसमें क्या होगा, उसका बॉडी मास ज्यादा हो जाएगा, वो और भारी हो जाएगा, या उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे। अब हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ने का सीधे सीधा मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो गए यहाँ इसके कंपैरिजन में। तो यानी कि ग्रोथ तो इसमें भी हो रही है। तो नॉन लिविंग थिंग्स भी तो ग्रोथ कर रही हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ कर रही हैं, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग को डिफाइन करने का फीचर ग्रोथ नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो कर रही हैं, इसीलिए सिर्फ लिविंग को डिफाइन करने का फीचर ग्रोथ नहीं है। सो ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ग्रोथ शो करेगा वो लिविंग ही होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो कर देते हैं। और ग्रोथ को कैसे जज किया जाता है, 2 ही पैरामीटर से जज किया जाता है, इंक्रीज इन बॉडी मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। इसीलिए ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग।